Matter has gone to the courts, but the ruckus continues even now. Essentially, and we'll tell you what's been happening, the counting of votes for electing 6 members to a key body of the Delhi municipality was interrupted today after the BJP objected to one vote being made invalid. Members of the ruling Aam Aadmi Party and the BJP climbed on tables and shouted slogans against each other in the MCD. The BJP said that they will not allow a recount. At least 242 of the 250 councillors in the Aam Aadmi Party run Civic body voted to select 6 members to the MCD standing committee. That's a powerful body that decides how funds are to be used and what projects. Shelley Oberoi, the Aam Aadmi Party leader who was elected mayor after a 2-month delay, had declared one vote to be invalid. For this she came under the firing line of angry BJP councillors who shouted, "You are not in your senses" at her. Some BJP councillors shouted Jai Shri Ram, praising Prime Minister Narendra Modi. The rivals from the Aam Aadmi Party shot back, Aam Aadmi Party Zindabad, Kejriwal Zindabad, etc., etc. So the new mayor declaring that there will be no recounting of votes for that standing committee. And once again, the situation has gone from bad to worse. Again, these are live shots which are coming in from inside the Municipality Commission of Delhi office, where again there has been pushing and shoving which has been taking place, with the new mayor declaring that no recounting of votes for the standing committee will take place. Just for the benefit of viewers across the country, this has been a very, very heated election process for the MCD. The Aam Aadmi Party resoundingly won these elections, but as far as the post of mayor is concerned, there is a contest which takes place, and eventually the Aam Aadmi Party did win that, and the mayor did end up becoming, well, look, they're fighting now, they're punching each other. I think there's a policeman there as well, but what does anybody do? की कोशिश कर रही है, लेकिन ये मारपीट कर रहे हैं, ये किस तरह का व्यवहार है? Tanushree, who joined. Tanushree, just describe for our viewers what's happening now. Stand by. Tanushree, you're on air. Well, go ahead. Yes. The ruckus has actually gone worse in the house, and you can see there in the visuals that what we saw day before yesterday, it's actually a worse, the situation is now worse, where
the councillors of both the parties, the Aam Aadmi Party and the Bharatiya Janata Party, they are at blow with each other. They are throwing bottles, they are throwing pages at each other, and now even, you know, they came close, Vishnu, to actually, punch each other. That is the discourse of the MCD house. All right, now. Tanushree, half a second. Let's just go across to our correspondent Sharath from NDTV India. Let's just listen in. माइक नहीं तोड़ा, उनके लोगों ने भी तोड़फोड़ की है। मतलब अगर कोई तोड़फोड़ करेगा तो आप लोग भी करेंगे? बहन जी, हम लोग भी कई दिन से सह रहे हैं। लगातार ये मेयर नहीं, पार्टी बन के काम कर रही है। मेयर सबका होता है, लेकिन मेयर का जो भाई कहाँ जा रहे हो तुम? Tanushree, go ahead. Just tell us what's happening. What we are seeing right now, full-fledged fisticuffs, people on the ground being bashed, kicking taking place. This is a WWF sort of fight that's taking place now as councillors from each party have gone absolutely berserk. और अभी भी यहाँ पर धक्का मुक्की चल रही है। दूसरे एंगल से दिखाता हूँ। Yeah, that's what I was telling you, Vishnu, that these are Yes. ये देखिए, ये अभी सदन का हाल है। एक पार्षद की शायद तबीयत खराब है। आम आदमी पार्टी के एक पार्षद को शायद तबीयत बिगड़ी है। लेकिन अभी भी देखिए, पहले कोशिश ये है कि उनको यहाँ पर ठीक किया जाए। पूरी तरीके से बेहोश हो चुके हैं, तो पूरी तरह से बेहोश हो चुके हैं। पानी डालकर उनको होश में लाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन फिर भी उनकी तबीयत ठीक नहीं हो रही है। मेयर की जो टेबल है, उस पर उनको लेटा दिया गया है, लेकिन Councillor, I'm told, I don't know if it's Aam Aadmi Party or any other party, just a man lying over there, he seems to be unconscious. Let's have Sharath talk. Can we get Sharath to tell us what's happening? आप सदन की सीधी तस्वीर देखिए कि सदन के स्टेज पर एक पार्षद दिखाई दे रहे हैं जिनकी तबीयत खराब हुई है या इनको चोट लगी है, अनकॉन्शियस हो गए हैं, बेहोश हो गए हैं। तिलक नगर के पार्षद हैं, शायद इनका नाम अशोक कुमार मानू है, और अभी सभी आम आदमी पार्टी के और जो दूसरे विधायक और पार्षद हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि इनकी स्थिति में सुधार आए, लेकिन यही सब होता है जब मारपीट होगी, तोड़फोड़ होगी और टकराव बहुत ही खराब स्तर पे पहुंच जाएगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि टकराव तो पहले से ही चल रहा था। ये देखिए, ये तिलक नगर से पार्षद हैं, कोशिश की जा रही है कि इनकी स्थिति ठीक की जाए। अभी फिलहाल आम आदमी पार्टी के पार्षद अच्छी खासी संख्या में सदन के अंदर ही दिख रहे हैं और बीजेपी के भी पार्षद हैं, दूसरी तरफ दिखाई दे रहे हैं। कुछ पार्षद बाहर निकले हैं, लेकिन ज्यादातर पार्षद अंदर ही फिलहाल अभी दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि सदन स्थगित नहीं हुआ था, मारपीट हुई थी, तोड़फोड़ हुई थी, तो उसके बाद ये स्थिति नगर निगम के अंदर बनी थी। केवल एक वोट को लेकर विवाद था और ऐसा समझा जा रहा है कि उस एक वोट पे बीजेपी के तीसरे कैंडिडेट और आम आदमी पार्टी के चौथे कैंडिडेट की किस्मत निर्भर थी। इसी वजह से इस एक वोट को लेकर ही बवाल हो रहा था। मेयर ने पेशकश की कि रिकाउंटिंग करा लेते हैं, लेकिन जब बहुत देर तक ये पेशकश बीजेपी ने नहीं मानी तो उसके बाद घोषणा हुई कि ठीक है, जब बीजेपी नहीं मान रही है तो फाइनल रिजल्ट घोषित कर रहे हैं एक वोट अवैध होने के आधार पर। और जब मेयर ये घोषित ही कर रही थी तभी जो बीजेपी के पार्षद हैं वो स्टेज पर चढ़े और सिक्योरिटी ने किसी तरह से जो मेयर हैं उनको वहाँ से निकाला, लेकिन उसके बाद तोड़फोड़ हुई, माइक तोड़े गए और आपस में मारपीट करते देखे गए। और एक नाम तो मुझे याद नहीं है, लेकिन एक पुरुष पार्षद एक महिला पार्षद के साथ बदतमीजी कर रहा था, हाथापाई कर रहा था।
कम से कम ये तो नहीं होना चाहिए पुरुष पुरुष के साथ ही हाथापाई कर ले, महिला को महिला के साथ करने दें। लेकिन ये तस्वीरें भी आज नगर निगम के अंदर देखी गई हैं। कुल मिलाकर एक वोट को लेकर ये सारा विवाद था और अभी भी जो है कोशिश चल रही है सदन के अंदर कि किसी तरह से हालात जो हैं, और अच्छी बात है जो आम आदमी पार्टी के पार्षद बेहोश हो गए थे, अब फिलहाल ऐसा लग रहा है होश आ गया है उनको, स्थिति ठीक लग रही है। बहुत खराब हालात इस समय दिल्ली नगर निगम में, केवल एक वोट। बहुत से लोग सोचते हैं कि एक वोट से क्या होता है, ये देखिए एक वोट से क्या होता है, मारपीट हो जाती है, तोड़फोड़ हो जाती है। तो ये दिल्ली नगर निगम का सदन है, ये सभी चुनकर आए हुए लोग हैं। वोट डालते वक्त लोगों ने सोचा भी नहीं होगा कि कुछ दिनों के भीतर यही जिनको वोट डाल रहे हैं ये मारपीट करते नजर आएंगे, तोड़फोड़ करते हुए नजर आएंगे, बोतलें खींच कर मारते हुए नजर आएंगे। लेकिन ये सब यहाँ दिखाई दिया है। अभी कोशिश चल रही है कि अब आगे क्या किया जाए। जो व्यवस्था है, सिक्योरिटी है यहाँ की, वो कोशिश कर रही है कि एक व्यवस्था बनाई जाए, लेकिन टकराव इतने बड़े स्तर पर है कि कैसे बीच का रास्ता निकाला जाए कोई नहीं जानता। कर दिया मैंने लाइव। तो जैसा कि मैं बता रहा था आपको, एक दूसरे एंगल से आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। निगम सदन के अंदर हम एमसीडी हेडक्वार्टर में 5वें फ्लोर पर हैं और 4थे फ्लोर पर जो सदन है वो स्थित है, वहीं पर मारपीट हुई है, वहीं पर हम जाने की कोशिश करते हैं। असल में बीजेपी के 3 उम्मीदवार मैदान में हैं, आम आदमी पार्टी के 4, कि कोई एक चुनाव पक्का हारेगा, तो वो जो एक हार का डर है वही ये सब दिखा रहा है। पार्षद यहाँ पे आ रहे हैं, सबकी अलग कहानी है और बीजेपी के पार्षद हमारे साथ क्या हुआ जी? जब मेयर रिजल्ट घोषित कर रहे थे तभी मारपीट तोड़फोड़ शुरू, आप लोग स्टेज पर चढ़े आज। इन लोगों ने दबाव की राजनीति, भारतीय जनता पार्टी के एक निगम पार्षद को टारगेट कर ये लोग, और इस तरीके का सिनेरियो बाद में क्या हुआ वो बात की बात है। वो पहले तो आप लोग स्टेज पर चढ़े हैं और तोड़फोड़ हुई है, माइक तोड़ा गया है। हम नहीं चढ़े, मैं स्टेज पर नहीं चढ़ा। आप नहीं चढ़े, पार्टी के दूसरे पार्षद ना मैंने देखा, ना इसके बारे में मैं कुछ कह सकता, ना मैंने किसी को चढ़ते हुए देखा। अच्छा, हाँ, इन्हीं के लोग ये ड्रामेबाजी कर रहे हैं। साथ भी धक्का मुक्की हुई है कि बटन टूटे हुए दिख रहे हैं। ये टारगेट कर रहे हैं ये लोग, इनका टारगेट करने का तरीका है गुंडागर्दी है प्योर। भारतीय जनता पार्टी सिद्धांतों पे चलने वाली पार्टी है, कोई सिद्धांत नहीं है। दिल्ली की जनता समझना चाह रही है एक वोट पे ऐसा क्या हो गया कि मारपीट की नौबत आ गई। देखिए, एक वोट इनवैलिड जानबूझकर कर रहे हैं, जबकि वहाँ हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी कह रहे हैं वैलिड है, वो कह रहे हैं इनवैलिड है, उनकी बात ही नहीं मान रही है। इस एक वोट से आपका कैंडिडेट चुनाव हार जाएगा, ऐसा है क्या? ऐसा ही हो रहा है, ऐसा ही हो रहा है। एक ही वोट की कीमत पे हमारा कैंडिडेट जो चुनाव हार रहा है और इसीलिए उनका जीत रहा है। अच्छा, ये सारी लड़ाई यही है। ठीक है, शुक्रिया। तो ये बीजेपी पार्षद हैं जो जिनका ये दावा है कि असल में एक वोट की जो कीमत है वो ये है कि आम आदमी पार्टी का पार्षद जो है, यानी कि जो आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट है स्टैंडिंग कमेटी में, रमिंदर कौर, वो चुनाव जीत जाएंगी और इस एक वोट के ही अवैध घोषित होने से पंकज लूथरा, जो कि बीजेपी के उम्मीदवार हैं स्टैंडिंग कमेटी मेंबर के लिए, वो चुनाव हार जाएंगे। तो इसीलिए एक वोट को लेकर सारी खींचतान ये चल रही है। तो ये
अभी फिलहाल मैं आपको यहीं से दिखा देता हूं, यहाँ पे सिक्योरिटी लगी हुई है। बीजेपी के पार्षद यहाँ पे खड़े हुए हैं, अभी पुलिस सिक्योरिटी बीच में है ताकि एक व्यवस्था बनाई जा सके और कम से कम जिस तरह का हंगामा धक्का मुक्की अंदर हुई। आपका क्या नाम है मैम? मेरा नाम शिखा भारद्वाज। आप बीजेपी पार्षद हैं? मैं बीजेपी से पार्षद हूँ। गर्व है मुझे कि मैं बीजेपी से हूँ, घटिया मानसिकता की नहीं। पर आज ये दिखाई दिया मैम कि मेयर जब अनाउंस कर रही थी उस समय आप लोग स्टेज पर चढ़े, उसके बाद ही सब कुछ शुरू हुआ है। सर ऐसा क्यों है? जो आपको दिखाया जाता है वही देखना चाहते हैं। ये मैंने देखा है। इफ यू हैव आस्क्ड मी अ क्वेश्चन, गिव मी द लिबर्टी टू आंसर। पिछले 2 घंटे से जो सदन में चल रहा था, आपने वो क्यों नहीं देखा? मैंने सब दिखाया हुआ है, सब दिखाया हुआ है। आपकी आपत्ति सब दिखाई हुई है, आप एक वोट को लेकर आपत्ति करें, सब दिखाया मैंने। 3 सीटें बीजेपी को मिली, 3 आम आदमी पार्टी को। क्या हक था उन्हें एक वैलिड वोट को इनवैलिड करार करने के लिए? जब इलेक्शन कमीशन से आई टेक्निकल टीम ने उनको रूल बुक भी दिखाई, वो रूल बुक को ऐसे बंद कर रही हैं। ये आपने नहीं देखा? निगम सचिव ने कहा कि आप गलत कर रही हैं, ये वैलिड वोट है। उन्होंने उनको कह दिया साइड में बैठो, मेरा निर्देश चलेगा। कमिश्नर साहब को कह दिया और सब वहाँ पे मुंह लटका के ऐसे ऐसे करके बैठे हैं। क्या आपको वो नहीं दिखा? कभी कह रही है मैं रिकाउंटिंग कराऊंगी। अरे जब तुम लोगों ने काउंटिंग की है तो तुम इसका मतलब रिकाउंटिंग का मतलब ये है कि अब कई धांधला जो है काउंटिंग के अंदर करना चाहते हो। सारी बात है, रिकाउंटिंग की सारी बातें सही है तो ये सवाल क्यों? नहीं मैम, मैं तोड़फोड़ और मारपीट वाली बात कर रहा हूं। तोड़फोड़ और मारपीट भी सिर्फ एक मिनट, तोड़फोड़ और मारपीट भी सिर्फ आप एक तरफा देखना चाहते हो। एक तरफ से उनकी भीड़ चढ़ ली और धक्का देके, जब वो इतने शांतिपूर्वक बैठे थे तो क्यों पिछले 1.5 घंटे से उनकी महिलाएं पक्ष वाली साइड छोड़कर विपक्ष के डेस्क के आगे खड़ी थी? मैं एक बेसिक सा सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ। ये लगता है देखने में कि जो चढ़े वो सिर्फ एक पार्टी के थे, दोनों पार्टी के चढ़े। आप इस दरवाजे की तोड़फोड़ अभी दिखा रहे थे, आप ही थे शायद। ये तोड़फोड़ मैंने नहीं। एक मिनट, आप मुझे बता दीजिए। मैं बताती हूँ यहाँ पे क्या हुआ। 10 पार्षद आम आदमी पार्टी के और एक पार्षद जो जमीन में गिरा हुआ था के पार्षद ने आपके जैसी वेस्ट कोट पहनी थी, मुंह नीचे था, तो मैं इसकी शक्ल नहीं देख पाई। उसके बाद क्या हुआ सुनिए। एक महिला पार्षद आम आदमी पार्टी की जो परली तरफ वाली सीढ़ी पे मेरे साथ खड़ी थी, वहां से भाग के आई, उसको उसके ऊपर धक्का दे। ये क्या था? ये तोड़फोड़ नहीं थी, ये उससे भी ज्यादा हैवानियत थी। तो ये दिल्ली नगर निगम का सदन है। अब देखना है कि ये दोबारा कैसे शुरू होता है, कब शुरू होता है, लेकिन हालात यहाँ पर फिलहाल बहुत खराब हो गए हैं। तभी पता चलेगा जब मेयर आएंगी कि वो क्या कह रही हैं और अब आगे क्या सदन की कार्रवाई किस तरह से चलेगी। जैसे उन्हें इंस्ट्रक्शन दी जाती है ऊपर से केजरीवाल के द्वारा या उनके बड़े आकाओं के द्वारा, ऐसे वो आगे उसको करती हैं। आप देखिए, हम हाउस में सब बैठे हुए थे और हमें धक्का देके बाहर निकाला गया। किसके इंस्ट्रक्शन पे सब कुछ हो रहा है? आपको शैली जी है। शैली ओबराय इस्तीफा दे, शैली ओबराय इस्तीफा दे। कुछ घंटे नहीं बीते इस लेडी को मेयर बने और इसने वो आतंक मचवा दिया दिल्ली के अंदर कि निगम नहीं बैठ पा रहा, सदन नहीं बैठ पा रहा हमारा। वो खुद भी वैसी है ना, वो खुद भी वैसी है। आतिशी जी लगातार जो है, लगातार मेरे कई पार्षदों को लगी है, कई पार्षदों को चोट आई है, मुझे ही नहीं कई पार्षदों को आई है। खत्म हो रही थी तो उस समय पर मेयर ने घोषणा की कि एक वोट जो है ये इनवैलिड है। अब ये घोषणा करते के साथ ही बीजेपी ने आपत्ति की। आम आदमी पार्टी इस पे खुश हुई क्योंकि वो जो वोट था उसके अंदर दिखाई ये दे रहा था कि वो वोट बीजेपी को जा रहा था। तो जाहिर सी बात है बीजेपी आपत्ति करेगी, आम आदमी पार्टी खुश होगी। इसको लेकर जो है लगातार विवाद चलता रहा, हंगामा होता रहा। तो मेयर ने घोषणा की कि ठीक है, आपको उस पर आपत्ति है जो मैं घोषणा कर रही हूँ, तो आप जो है आपके कहने पर मैं रिकाउंटिंग करवा लेती हूँ। रिकाउंटिंग के लिए भी बीजेपी तैयार नहीं हुई, उनका कहता रिकाउंटिंग हम नहीं करवाएंगे। और उसके बाद जो है लगातार हंगामा सदन के अंदर चलता रहा। फिर आखिरी में जब बहुत देर तक हंगामा चलता रहा तो मेयर ने यह घोषणा की
कि क्योंकि जो काउंटिंग है उसमें एक पक्ष सहमत नहीं हो रहा है, तो खाली एक पक्ष के आधार पर तो रिकाउंटिंग हो नहीं सकती। जो पार्टीज इसमें स्टेक होल्डर्स हैं उनको होना होता है काउंटिंग के दौरान, तभी जो काउंटिंग है उसकी ऑथेंटिसिटी बनती है और ये माना जाता है कि हाँ ये ऑथेंटिक है। तो बीजेपी क्योंकि इंटरेस्टेड नहीं थी और मेयर ने ये कहा कि आप नहीं आ रहे हैं, ठीक है, अब इस रिकाउंटिंग नहीं हो रही, एक वोट अवैध के आधार पर मैं अब रिजल्ट बनवा रही हूँ, घोषित कर रही हूँ। तो जैसे ही ये रिजल्ट वो अनाउंस कर रही थी कि एक काउंटिंग में एक वोट अवैध पाया गया है और बाकी का रिजल्ट इस तरह से है कि मोहिनी जीनवाल जो है, जैसे उन्होंने बोला तो तभी बीजेपी के पार्षद जो हैं वो बाईं तरफ से, जो मेयर का दाहिनी तरफ होगा, मेयर के दाहिनी तरफ से वो स्टेज पर चढ़े और जब एक बार वो चढ़े तो उसके बाद सिक्योरिटी तो जो है मेयर को निकाल के ले गई, लेकिन उसके बाद जो है ये देखा गया कि बीजेपी पार्षद जो थे वो माइक तोड़ते हुए नजर आ रहे थे और उसके बाद में धक्का मुक्की मारपीट जो है वो दोनों पक्षों के बीच में, आम आदमी पार्टी और बीजेपी के जो लोग हैं, पार्षद हैं, इनके बीच में खूब मारपीट भी हुई है। एक का मैं नाम नहीं जानता, लेकिन ऊपर से दिखाई दे रहा था कि एक पुरुष पार्षद जो था वो महिला पार्षद के साथ मारपीट कर रहा था। ये तो और भी इससे घटिया काम और क्या हो सकता है। तो इसलिए लेकिन ये बताता है कि टकराव कितने खराब स्तर पर है और अभी जो है फिलहाल कोशिश ये की जा रही है कि कम से कम पहले मीडिया को कंट्रोल कर लें। ये पुलिस लग गई है यहाँ पर आमतौर पर पुलिस नहीं होती। जहाँ मैं खड़ा हूँ, ये जो दीवार है, ये वाली दीवार है, इसके दूसरी तरफ ही जो है सदन चल रहा है। अब चल क्या रहा है, पार्षद वहाँ बैठे हुए हैं क्योंकि मेयर तो वहाँ पर है नहीं, तो यहीं पर जो है अभी कोशिश की जा रही है कि मीडिया को कंट्रोल किया जाए और मीडिया और जो पार्षद हैं उनमें जो है बातचीत ना होने दी जाए, ताकि ये जो विवाद चल रहा है ये फिलहाल आगे ना बढ़े, क्योंकि जितना भी मीडिया से बात करेंगे तो वो दोनों ही पक्ष जो हैं वो अपना दुखड़ा रोएंगे और मामला शांत नहीं होगा। तो अभी कोशिश चल रही है, देखते हैं कि ये कोशिश जो है कब तक रंग लाती है। लेकिन फिलहाल ऐसा लग रहा है कि जैसे पिछले 2 दिन पहले सदन पूरी रात चल गया था, हालात खराब थे, ऐसे ही संभव है कि अब मारपीट हो गई है तो उसके बाद सदन कैसे चलेगा। जो लोग आपस में मारपीट करके बैठे हैं वो एकदम से साथ कैसे बैठ जाएंगे। कूल डाउन होने के लिए कुछ समय चाहिएगा शायद। लेकिन दिक्कत यह है कि काउंटिंग वोट पड़ चुके हैं और वोटों को लेकर अब कहीं जाया नहीं जा सकता, तो इसीलिए भी जो है रिजल्ट अनाउंस करना जरूरी है। तो इंतजार हो रहा है कि मेयर जो है आखिर आकर इसमें क्या कह रही हैं। All right, again, in case you've just joined us, what you are seeing is the most bizarre series of fights by political leaders I've seen. On the left-hand side of your screen, inside the Delhi municipality building, the MCD house as it's known, was an Aam Aadmi Party councillor who fainted because of all the fighting near him, came around a short while later. But that image now on the right-hand side of your screen, on the left-hand side of your screen, you can see a lot of these women councillors fighting with each other, tearing each other's hair out, bashing each other up. Men, women, it was a free-for-all. And let's just go back to NDTV's Sharad Sharma, who's got more details. लोग ये जानना चाह रहे हैं, एक वोट इतना अहम हो सकता है कि मारपीट हो जाए, तोड़फोड़ हो जाए। देखिए, बात एक वोट की नहीं है, बात यह है कि एक बहुत पूरी तरह घायल है, हॉस्पिटल ले जाने लगे। बात यह है कि जो ऑफिशियल और संवैधानिक व्यवस्था चल रही थी और कम से कम आप सबने देखा कि 1.5-2 घंटे तक पूरी काउंटिंग हुई, क्योंकि ये बड़ी कॉम्प्लेक्स काउंटिंग होती है और इसके अंदर फर्स्ट प्रेफरेंस के वोट, सेकंड प्रेफरेंस के वोट काउंट किया जाता है और एक एक कागज को 3-3 बार, मैं खुद एजेंट था बीजेपी की तरफ से, आम आदमी पार्टी के एजेंट थे, सबने 3-3 बार एक एक कागज को देखा और सबने वैलिडेट किया और रिजल्ट तैयार हो गया था, 3 बीजेपी के और 3 आम आदमी पार्टी के। लेकिन आखिरी समय में जो पंकज लूथरा जी थे, जो बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे थे लेकिन क्लियर हो गए थे एक वोट से, उनका वोट काट के उन्हें हराने की कोशिश, हारने के चांस थे। अच्छा, हारने के चांस थे क्योंकि एक इनके कैंडिडेट के 33 थे, हमारे कैंडिडेट के 34 थे। अच्छा, तो अगर वो एक वोट कम करके और इनवैलिड करते तो 33-33 बराबर हो जाते, तो काफी चांस थे कि वो कैंडिडेट जो है डिक्लेयर ना हो। तो लेकिन सर किसी भी सूरत में ये मारपीट तोड़फोड़ थोड़ी जस्टिफाई हो, मारपीट तो मतलब ये तो जबरदस्ती ऐसा माहौल क्रिएट किया गया मेयर द्वारा। अगर वो संवैधानिक रूप से चलती, रिजल्ट डिक्लेयर करती, कुछ नहीं होता। सुबह से
दोनों पार्टियों के निगम पार्षद आपस में खाने पीने की चीजों का आदान प्रदान कर रहे थे, हंसी मजाक कर रहे थे, माहौल बहुत बढ़िया था। लेकिन मेयर ने अपनी पार्टी के एक पार्षद को जिताने के चक्कर में असंवैधानिक काम किया, जिससे माहौल गर्म हुआ और आपस में जो है वो लड़ाई झगड़ा हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया। अभी कुछ यहाँ पर हंगामा होता दिख रहा है, एक बार दिखाने की कोशिश करता हूँ क्या चल रहा है। ये हंगामा चल रहा है, वो मौके पर आम आदमी पार्टी के जो पार्षद बेहोश हो गए थे, ये वो हैं। तो फिलहाल देखिए, ये आम आदमी पार्टी के एक पार्षद हैं जिनकी तबीयत खराब हुई थी, तिलक नगर के पार्षद हैं। तो ये फिलहाल अभी बाहर आ रहे हैं, एक बार इनसे देखते हैं अगर बात करने। महिलाओं पे हमला किया, मेयर पे हमला किया उन्होंने। मेयर पे हमला किया भाजपा के पार्षदों ने। बुला उसको, चौधरी को, उसको मेयर को मारा उन्होंने, मेयर पे हाथ उठाया उन्होंने, तब जाके इनकी ये झगड़ा हुआ स्टार्ट। देखिए ये और ये कह रहे हैं कि दिस इज द सिचुएशन राइट तस्वीर है और देखिए। जी सर, हाँ बंद मैंने करवाया दिया यार, मेरे हाथ पैर से कमा हुआ था। हाँ हाँ। All right, again, this brawl taking place in the municipality office in Delhi. This entire process has been extremely heated right from the time of the elections. The Aam Aadmi Party did have the numbers at that stage. At that stage, they won quite resoundingly, but the post of mayor was contested. Let's just listen in. We've got a few more details. अरे छो पकड़ ले गया, एक मिनट, कोई नहीं। आज एमसीडी के हाउस में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी गुंडागर्दी का, अपनी लफंगई का एक और प्रमाण पूरे देश के सामने रखा है। स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव चल रहा था, स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव और उसकी वोटिंग पीसफुली हुई, स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव की काउंटिंग पीसफुली हुई। लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी को लगा कि वो स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव हार रहे हैं, उन्होंने हमारी मेयर पर, एक महिला मेयर पर स्टेज पर चढ़कर बुरी तरह से हमला किया। मेयर को अपनी जान बचाने के लिए शैली ओबरॉय जी, यूनिफाइड एमसीडी की दिल्ली की पहली मेयर, एक महिला, उनको अपनी जान बचाकर हाउस से भागना पड़ा। हाउस से वो बाहर गईं। हाउस के बाहर भी भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने, पुरुष पार्षदों ने उन पर फिजिकली असॉल्ट किया, उन पर फिजिकली हमला किया। ये क्या गुंडागर्दी है भारतीय जनता पार्टी की? जब चुनाव हार गए हो तो अपनी हार को मानो। काउंटिंग के समय जब तुम्हें समझ में आ गया कि तुम एक वोट से हारने वाले हो, तो आपने मार पिटाई शुरू कर दी, आपने महिला मेयर पे हमला शुरू कर दिया। पुरुष काउंसलरों ने स्टेज पर जाकर दिल्ली की पहली महिला मेयर डॉक्टर शैली ओबरॉय पे हमला किया है। भारतीय जनता पार्टी की ये गुंडागर्दी देखकर पूरा देश शर्मसार है। आज पूरा देश देख रहा है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव हार जाती है तो पहले ठीक से इलेक्शन मेयर का नहीं होने देती है, डिप्टी मेयर का नहीं होती है, इलीगल तरीके से एल्डरमैन अपॉइंट करती है, उनसे इलीगल तरीके से वोट करवाने की कोशिश करती है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से जाकर हम चुनाव करवाते हैं। चुनाव उनके तरीके से नहीं होता तो कल के चुनाव में बैलेट बॉक्स चोरी करके चले गए, बैलेट पेपर फाड़ दिए। आज हमने उनकी सारी टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करते हुए एक से चुनाव करवाया, फिर से चुनाव करवाया।
मेयर ने उनकी सारी कंडीशंस एक्सेप्ट करी कि फोन भी अलाउड नहीं है। उसके बाद जब काउंटिंग में उनको समझ में आता है कि वो चुनाव हार रहे हैं, वो मेयर पे हमला कर देंगे। ये कैसी गुंडागर्दी है? क्या भारतीय जनता पार्टी जनादेश को स्वीकार नहीं कर सकती है? दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी को चुन के भेजा है। भारतीय जनता पार्टी वालों, अपनी गुंडागर्दी बंद करो, लोकतंत्र का सम्मान करो, दिल्ली की जनता के जनादेश का सम्मान करो, संविधान का सम्मान करो। ऐसी बूथ कैप्चरिंग तो 30-30 साल पहले बिहार में नहीं होती थी, जो आज पूरे देश के सामने, कैमरास के सामने, देश की राजधानी में भारतीय जनता पार्टी के पार्षद कर रहे हैं। मेरी भारतीय जनता पार्टी से हाथ जोड़ के अपील है, दिल्ली के जनता के जनादेश को स्वीकार करिए, गुंडागर्दी बंद करिए और महिला मेयर पे जो हमला करते हैं उसको बंद करिए। महिला मेयर पे जो हमला हुआ है उस पर हम पूरी कानूनी कार्यवाही करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के जो पार्षद हैं जिन्होंने महिला मेयर पे हाउस के अंदर और हाउस के बाहर हमला किया है, उनको हम जेल भेजेंगे। रिकाउंटिंग कैंसिल कर दी गई थी मैम, उसके बाद भी क्या लग रहा है आपको? जब एक वोट इनवैलिड पाया गया, अगर आप एमसीडी का एक्ट देखिए, वोट को अगर किसी वोट का इनवैलिड होने का डाउट है तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर का डिसीजन होता है कि वो वोट वैलिड है कि इनवैलिड। मेयर ने एक वोट को इनवैलिड घोषित किया क्योंकि उस वोट पे explaining that's the Aam Aadmi Party perspective, but basically saying that the first elected mayor of a unified municipal corporation of Delhi, a woman of the Aam Aadmi Party, Shelley Oberoi, was physically assaulted by BJP workers. Remember, it really depends on which side you want to believe. Let's just go back to my colleague Sharad, who's got more details. ये बड़ी ही खराब तस्वीरें आज नगर निगम से आई हैं। ये तो दिखाई दिया कि बीजेपी के पार्षद पहले चढ़े और मेयर को वहाँ से निकलना पड़ा रिजल्ट अनाउंसमेंट के दौरान। लेकिन वो लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि आप जब अपनी मनमानी करेंगे, आप जो वैध वोट है उसको अवैध घोषित करेंगे तो और क्या होगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से गुंडागर्दी पे उतर आई है। और वो पहले भी ये चुनाव जो था माननीय सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान के बाद हुआ। अब भारतीय जनता पार्टी ये मानने को तैयार नहीं है कि वो हार गई है। निगम के चाहे मेयर के चुनाव की बात हो, डिप्टी मेयर चुनाव की बात हो, और तो और आम आदमी पार्टी को 138 वोट मिले और भारतीय जनता पार्टी को उनके जो पार्षद थे उससे भी 5 कम वोट मिले। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह बौखलाई हुई है। पर वो ये कह रहे हैं कि एक वोट को लेकर मामला फंसा था, अगर वो इनवैलिड हो जाएगा तो उनका कैंडिडेट फंस जाएगा, इसलिए आपने जानबूझ के। देखिए, ऐसा तो नहीं हो सकता कि अगर वो वोट इनवैलिड हो जाएगा तो वो उसको खत्म कर देंगे। भाई इनवैलिड तो इनवैलिड है, उसको कोई वैलिड तो नहीं कर सकते। मेयर के पास पावर तो नहीं वैलिड करने की, किसी के पास पावर नहीं है। अगर कोई चीज गलत है तो गलत है, अगर वोट इनवैलिड है तो वो इनवैलिड है, उसको कोई वैलिड नहीं कर सकता। स्वीकार नहीं कर रही है, गुंडागर्दी कर रही है। ये कुलदीप कुमार थे, आम आदमी पार्टी के विधायक हैं। नीचे सदन के अंदर तो हंगामा चल ही रहा है, लेकिन ये जो एमसीडी की बिल्डिंग है यहाँ पर अलग अलग स्तर पर हंगामा चल रहा है और इसीलिए आप देखिए ये पुलिस व्यवस्था जो है ये बढ़ाई जा रही है। Just behind is this man who fell unwell, a councillor, I believe, of the Aam Aadmi Party. He's lying flat over there. He was trying to get out of the MCD office a little while earlier on. The MCD house was unable to do that. He was pushed back by the police, perhaps for his own safety at that stage. He fallen unconscious some time back in all of this fighting. He was helped up and he was then there was an attempt to try and take him out. That didn't work earlier on. I'm slightly unclear about whether this is actually the older footage about what I'm talking about. Sorry, I correct myself. This is live footage. So this man who you see on your screen, he was lying down earlier on. He managed to get up. He was being escorted out. But then for some reason they couldn't get him out. And he's back lying down again and is still
quite unwell. He was looking visibly sick even earlier on. We tried to see how people are going to help him. They're just fanning him over there. I don't know if there are any doctors, but that man needs to be taken for help. At this stage, his situation quite clearly deteriorating. We've been seeing images of him, video of him now for the last half an hour, 45 minutes. The overall situation in that Civic body house is absolutely chaotic. We're told in other parts, even now, there is pushing around, fisticuffs, people bashing each other up. As I was mentioning a little while back, it all was about one final vote, which was declared invalid. This is a voting for appointments in a key committee of the Municipal Corporation of Delhi. Again, that's what's happening right now. बीजेपी का पार्षद बनाया जा रहा है जिसको आम आदमी पार्टी के पार्षद मार रहे हैं। ईश्वर साहब को खुद दिखाएंगे कि कैसे माननीय हर को कानून की वजह चले जा रहे हैं। देखिए एक पार्षद को किसने व्यक्ति मार रहा है। देखिए अब इसको बचा के बाहर बचाया गया है, उसका बाहर करा गया है, लेकिन उससे पहले जो ईश्वर साहब वो लगातार आपको हैरान कर देंगे, परेशान कर देंगे। आज इस लोकतंत्र की जो वैल्यू है लगातार तोड़ी जा रही है, गिराया जा रहा है इस लोकतंत्र में। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र आज शर्मिंदा है अपने पार्षदों की वजह से, अपने पार्षदों के जज्बात की तरफ से। देखिए एक पार्षद को मारपीट के कैसे आलम से लटाया गया और साथ लगातार मारपीट की जा रही है। लेकिन Cross the distance between darkness and vision. Teach a generation that has lost all hope. Treat a patient from thousands of miles away. None of this was possible till technology stepped in and made it possible. A selection of the finest stories from across the country where technology comes with a human touch. Unleash your dreams with Snapdragon in collaboration with NDTV. Only on the NDTV network. Legacy is often seen as a burden of expectations. It comes with its own set of challenges. The challenge to take it forward, challenge to reimagine, challenge to be in the present, and also challenge to think about the future. What accountability are you talking about? As long as the core values and principles remain uncompromised. Debates are essential not just for journalism but for humanity. It ignites our mind, opens it up for counter-opinion. To hear all views, opinion of all hues. Which is why the oldest running debate show on Indian news television is not 22 years old, but it is young at 22. इस इनिशिएटिव को मैं अभिनंदन करता हूं कि सच को सच के रूप में पेश करने का उन्होंने साहस दिखाया। So let us begin the big fight. Gadgets 360 is here to help you with all your tech needs. Gadget 360, Gadget Love. Gadgets 360, Gadgets Love. You too can get some gadget love with buying guides, expert reviews, and all the latest news on Gadgets 360. When a glimmer of hope gave way to a new global threat, we were there. As our soldiers squared off against a hostile neighbor for yet another freezing winter, we were there. When brutality overwhelmed justice and a mockery was made of the rule of law, we were there. When the death of our first Chief of Defence Staff united our nation, we were there. Hope, justice, the truth. Left, right and centre with me, Vishnu Shobh, Monday to Thursday, 9 p.m. on NDTV 24/7. Legacy is often seen as a burden of expectations. It comes with its own set of challenges. The challenge to take it forward, challenge to reimagine, challenge to be in the present, and also challenge to think about the future. What accountability are you talking about? As long as the core values and principles remain uncompromised. Debates are essential not just for journalism but for humanity. It ignites our mind, opens it up for counter-opinion. To hear all views, opinion of all hues.
Which is why the oldest running debate show on Indian news television is not 22 years old, but it is young at 22. इस इनिशिएटिव को मैं अभिनंदन करता हूं कि सच को सच के रूप में पेश करने का उन्होंने साहस दिखाया. So let us begin the big fight. Cross the distance between darkness and vision. Teach a generation that has lost all hope. Treat a patient from thousands of miles away. None of this was possible till technology stepped in and made it possible. A selection of the finest stories from across the country where technology comes with a human touch. Unleash your dreams with Snapdragon in collaboration with NDTV. Only on the NDTV network. Legacy is often seen as a burden of expectations. It comes with its own set of challenges. The challenge to take it forward, challenge to reimagine, challenge to be in the present, and also challenge to think about the future. What accountability are you talking about? As long as the core values and principles remain uncompromised. Debates are essential not just for journalism but for humanity. It ignites our mind, opens it up for counter-opinion. To hear all views, opinion of all hues. Which is why the oldest running debate show on Indian news television is not 22 years old, but it is young at 22. इस इनिशिएटिव को मैं अभिनंदन करता हूं कि सच को सच के रूप में पेश करने का उन्होंने साहस दिखाया. So let us begin the big fight. Gadgets 360 is here to help you with all your tech needs. Gadget 360, Gadget Love. Gadgets 360, Gadgets Love. You too can get some gadget love with buying guides, expert reviews, and all the latest news on Gadgets 360. When a glimmer of hope gave way to a new global threat, we were there. As our soldiers squared off against a hostile neighbor for yet another freezing winter, we were there. When brutality overwhelmed justice and a mockery was made of the rule of law, we were there. When the death of our first Chief of Defence Staff united our nation, we were there. Hope, justice, the truth. Left, right and centre with me, Vishnu Shom, Monday to Thursday, 9 p.m. on NDTV 24/7. Legacy is often seen as a burden of expectations. It comes with its own set of challenges. The challenge to take it forward, challenge to reimagine, challenge to be in the present, and also challenge to think about the future. What accountability are you talking about? As long as the core values and principles remain uncompromised. Debates are essential not just for journalism but for humanity. It ignites our mind, opens it up for counter-opinion. To hear all views, opinion of all hues. Which is why the oldest running debate show on Indian news television is not 22 years old, but it is young at 22. इस इनिशिएटिव को मैं अभिनंदन करता हूं कि सच को सच के रूप में पेश करने का उन्होंने साहस दिखाया. So let us begin the big fight. Cross the distance between darkness and vision. Teach a generation that has lost all hope. Treat a patient from thousands of miles away. None of this was possible till technology stepped in and made it possible. A selection of the finest stories from across the country where technology comes with a human touch. Unleash your dreams with Snapdragon in collaboration with NDTV. Only on the NDTV network. Legacy is often seen as a burden of expectations. It comes with its own set of challenges. The challenge to take it forward, challenge to reimagine, challenge to be in the present, and also challenge to think about the future. What accountability are you talking about? As long as the core values and principles remain uncompromised. Debates are essential not just for journalism but for humanity. It ignites our mind, opens it up for counter-opinion. To hear all views, opinion of all hues.
Good evening, it's 8 o'clock. The top headlines are what we're seeing right now. This scene in Delhi's Municipal Corporation House are becoming a national embarrassment. You're seeing punches, kicks, chappals being thrown all over one vote and the recounting for a committee election. This is what's being seen in screens across India as Delhi's Municipal Corporation has become literally a national embarrassment. Those are the visuals of the day, but let's just look at the top headlines tonight. The Prime Minister speaks at the G20 Finance Ministers meet in Bengaluru. He says it's now up to the custodians of the leading economies and monetary systems to bring stability, confidence and growth back to the global economy. 1 year of the Ukraine war, fresh sanctions announced by the West. India and China, South Africa abstained from an anti-Russia resolution at the UN. Air India announced a major new jobs plan in India. Over 5,000 new jobs this year are part of Air India's mega expansion plan. 900 pilots, over 4,000 cabin crew to be hired. Delhi councillor chaos. It's becoming a national embarrassment as there are punches and kicks by male and women councillors. The third day of violence over committee elections. It's Brawl 2.0 due to just one invalid vote. The chaos erupted after the BJP refused a recount. The Congress plenary session in Chhattisgarh, the chairman of political affairs says we will work with Mamata Banerjee, KCR and Nitish Kumar. However, one decision is that there will be no elections for the Congress Working Committee. Only 3 members asked for CWC elections. Now, Kharge, the president, will decide the CWC via nominations. The worst week for India's markets in over 6 months. Growth, interest rate concerns dampen investor sentiment. A pro-Khalistani leader's aide is released from jail in Amritsar a day after cops were surrounded by sword-wielding men. Now a roadshow for Lovepreet. He's the key aide of Amritpal Singh, a pro-Khalistan ideologue who's now emerging as a rallying point in Amritsar. And after defeat, a touching moment off the pitch as a captain who came from hospital to try and save the game. Here's one of Indian women great cricketers consoling her after India's narrow loss. Our lead story tonight, in the first anniversary of the Ukraine war, G20 finance ministers of the top nations were meeting in Bengaluru today, including the US, Europe's and Russia's finance ministers. The Prime Minister spoke today at this meeting, stressing on the need for the custodians, as he said, of the large economies and multilateral systems to actually look at bringing back stability and growth to the international economy. The Prime Minister addressed the G20 finance ministers, the grouping of 19 countries and European Union, which accounts for 80% of the world economy. On the menu, a plate full of crises, especially climate change and the debt crisis. The day after Ajay Banga was named by the US as its nominee World Bank president, the Indian Prime Minister joined the US in calling on such institutions to address climate change as well as high debt levels. Even as the world population has crossed 8 billion, progress on sustainable development goals seems to be slowing down. We need to collectively work to strengthen multilateral development banks for meeting global challenges like climate change and high debt levels. In the hall were both the Russian and the West finance ministers. However, while not mentioning the Russia-Ukraine war explicitly, on the 1 year of President Putin's invasion of Ukraine, the Prime Minister said the ministers had to restore confidence to the global economy. It is now up to you, the custodians of the leading economies and monetary systems of the world,
to bring back stability, confidence, and growth to the global economy. The G20 discussions in 2023 will focus on exploring holistic solutions to the most pressing global challenges. The G20 can transform lives around the globe by leveraging the complementary strengths of its members while respecting country needs and circumstances. At the G20, a new system has been created, allowing G20 guests to use India's path-breaking digital payment platforms like the UPI. Through this, India is using G20 as a vehicle to make member nations to harness the power of technology. Explore and harness India's stack. Now that was a message and a suggestion from Prime Minister Narendra Modi to the world leaders attending the G20, also promoting in way that is India's digital infrastructure to the world. Now other major issues that remained on top priority was of course the climate change, and also Prime Minister Narendra Modi focusing especially on strengthening the multilateral development banks and also in a way to tackle especially lending as far as climate change is concerned. In the coming days, we're also going to see where US Treasury Secretary Janet Yellen also trying to press for consensus for reformation of the multilateral development banks. At G20 with Kumar Shrija for NDTV. And as the Russian and Western finance ministers in one room there amid tension, the one-year anniversary of the invasion was marked by the West announcing fresh sanctions. However, India and China were amongst the countries who abstained from a resolution moved against the Russia invasion. Here's a video released by the Ukrainian president. A year after Russian tanks rolled into Ukraine in a war that's caused untold misery to millions, India continued its principled position of not voting against Russia at the UN General Assembly. But the language used by India's permanent representative in explaining New Delhi's position was sharper and more critical of Russia than in the past. Reports of attacks on civilians and civilian infrastructure are also deeply concerning. While reiterating that this cannot be an era of wars, India's ambassador said the resolution fell short of answering key questions. The most important, are we anywhere near a possible solution acceptable to both sides? While we take note of the stated objectives of today's resolution, given its inherent limitations in reaching our desired goal of securing lasting peace, we are constrained to abstain. India's decision to abstain will come as disappointment for Kiev. Earlier this week, the head of Ukraine's president's office had called the National Security Advisor Ajit Doval, specifically asking India to vote in favor of the resolution. India's engagement with Russia over the last year has been two-pronged. While both the Prime Minister and the National Security Advisor have reached out to President Putin to end the war, India has defied the West by importing Russian oil in India's national interest, a position that key European partners have now begun to accept. India buying oil from Russia is none of our business, basically. That's something that the Indian government decides, and as you get it at a very, very low price, I cannot blame the Indian government to buy it. As the world's largest democracy and president of the G20, India likely have a key role over the next year in finding a peace plan that works for both sides.
While the contours of such a plan may not have been defined, Ukraine has repeatedly reached out to Prime Minister Modi to use his connect with the Russian president to try and end the war. Vishnu Shom for NDTV. And in the other big headline, Air India is to offer over 5,000 jobs domestically. The details of that with Vishnu. So Vishnu, last week we heard all about the jobs that would be created in the United States and the UK and France with Air India's mega orders. And now the good news about jobs being created in India. A couple of concerns, Sonia. While, where are we going to get these pilots from? And, this is what a lot of people in the aviation industry are asking. Where is Air India going to find 900 pilots in the year 2023? If they are to get pilots, because a lot of them operate Airbus aircraft from the other airlines, then there's going to be a salary war. Will some of the other airlines be able to match Air India's salaries if it is higher? And if Air India can't do that, would they have to bring in expat pilots? In the long run, India needs to have our own homegrown and trained pilots. That's going to take time. What will be easier, 4,200 cabin crew this year, they'll be recruited from across the country. But Sonia, one final word. In as much as we talk about Air India and its historical legacy, this is an entirely new airline. Think about it, 5,000 jobs, 470 aircraft. They really plan to conquer the world, as it were. The skies, at least, Vishnu, of aviation, civil aviation. But as I said, great news on jobs there. And thanks so much for that update. But let's go across to something which is really nothing to celebrate. In fact, it's actually a national embarrassment. And this is what is about elected councillors. I mean, just look at these visuals. Whether it's men councillors, women councillors, their punches, hair being pulled, chappals being thrown, people fainting. All this is over committee elections of the municipal corporation. So these are not even national elections, but clearly crucially important. Look at that man there in red. There he goes. He climbs up. Okay, he's already punched somebody. He gets punched back. He then jumps down, gets overpowered. I mean, this is really like some wrestling match somewhere. You don't expect this to be in an elected councillors' representatives hall in a way. And here, women councillors now going for each other. So there they are, pulling hair, pushing each other, clothes being torn and ripped. All this apparently but one invalid vote in the counting for a committee election. So Tanushree is there. She's got the latest. This is what one vote can do. The Aam Aadmi Party and the Bharatiya Janata Party councillors started a fight. There was violence inside the well of the house in the MCD, and now you can see in the visuals that many councillors have even fainted after the fighting. The violence has stopped, and all this over the elections, over the voting and counting of votes of the standing committee. Now this has been going on for the last 3 days. After 3 failed attempts and Supreme Court's intervention, finally the mayor was, Delhi MCD's mayor was elected, and Delhi's deputy mayor were elected. But the standing committee, which is the most important committee of the MCD, those election couldn't take place. There was ruckus, microphones were ripped off, there was huge damage, as we saw day before yesterday, an entire high decibel online drama. But now after 2 days, the things are same, even worse. The counting of votes have concluded, and the standing committee members were just before the standing committee members were about to announce, the mayor was about to announce the results. The Bharatiya Janata Party said that one vote which has been declared invalid by the Aam Aadmi Party councillor and a mayor of the Delhi MCD, Shelly Oberoi, that goes against the rules of the election commission's technical committee, under the supervision of which the standing committee's voting took place. But the Aam Aadmi Party said that 3 vote goes to the Aam Aadmi Party, 3 goes to the BJP. But the BJP was saying that it's 4 for BJP and 2 for Aam Aadmi Party. And that's why there was entire ruckus, and the ruckus was so bad that it wasn't just verbal spats, verbal, fights. It was physical. The councillors were punching each other, throwing papers at each other, abusing each other. And this is the discourse at the MCD house, where Aam Aadmi Party councillors and the BJP councillors have been fighting for the last many days over the elections of the standing committee of the MCD. I'll ask camera person Prem Singh to show you around and show you the kind of security deployment which is here, but it still doesn't prevent the councillors
to come at blow with each other. And there were many councillors who fainted, there were many councillors who were abusing each other, and this is all happening right now in the Delhi MCD house. This has been going on for the last 3 days. This morning the elections concluded, the voting process happened smoothly, and we were expecting that the results will be out, but now the results are not out. Now the councillors have gotten down to violence. With camera person Prem Singh, I'm Tanushree Pandey for NDTV. Unbelievable visuals there, Tanushree. And just look at that amount of security that's there to guard these councillors who seem intent really on bashing each other up. Meanwhile, let's go across to Raipur in Chhattisgarh, where the Congress plenary has begun today. The chairperson of the Committee of Political Affairs said that the Congress is ready to work with opposition leaders like Mamata Banerjee and KCR of Telangana, the Chief Minister, and Nitish Kumar of Bihar. Now, though Nitish Kumar has said the Congress should lead any opposition alliance, both Mamata Banerjee and KCR have stayed away from any such invitation. In fact, Mamata Banerjee and Rahul Gandhi recently trading barbs in the Meghalaya elections. Another big decision on day one of the plenary is that there will be no elections for the Congress Working Committee. The Raipur Convention is possibly the most important Congress meeting ahead of the 2024 elections, being watched closely by the opposition. However, the first thing the party, now led by Anand Gandhi, pushed through was to change the party constitution to ensure that Sonia and Rahul Gandhi as ex-presidents remain in the Congress Working Committee, the top decision-making body. Priyanka Gandhi Vadra, who's not an ex-president, can be nominated, as the party today decided not to hold elections to the Congress Working Committee. The changes ensure a permanent place for the Gandhis, continuing their firm hold on the party. See, we had an election for the Congress president, and Shri Kharge ji was elected by a thumping majority. Almost 85% of the delegates, PCC delegates, have voted for him. Now the Congress Working Committee discussed threadbare and has passed a resolution because we have full faith in the leadership of Mallikarjun Kharge. Three leaders, Ajay Makan, Digvijay Singh and Abhishek Singhvi, wanted elections to be held, but the party decided to continue with the culture of nominations. It's not that the new president has led to weakening of the party or people breaking away. No signs have come. Otherwise, with everybody sniffing around the Congress, if there was any evidence that party is weakened after Mr. Kharge is taking over, that hasn't happened. Okay, so I think election did good for us. On the larger question of the Congress's role in the next elections to the parliament, the party needs to decide on its alliance strategy and bury differences despite the contradictions and rivalries within the opposition, leading to a low index of opposition unity. We have worked with Mamata ji, we have worked with Nitish ji, we have worked with Chandrasekhar Rao. Also, I very closely worked during the revision. So it's not difficult. There may be some fault lines on our part also. If those fault lines are removed, I think it's very difficult. It is quite easy to join together and fusion can. Party workers, leaders have one underlying theme here at Raipur at the AICC convention. The focus, of course, being that Rahul Gandhi should lead the party ahead of the 2024 elections. He has that premier position, but the big question is they're extremely cautious of whether he will be leading as the prime ministerial candidate once again. With camera person Ashok Male and Arvind, Sunil Prabhu, NDTV. Well, let's go across to Amritsar now live, where Tanishq is, because that's where a pro-Khalistan leader, Amritpal Singh's aide, Lovepreet Tufan Singh, walked out of jail today, just a day after cops were surrounded by sword-wielding supporters of Amritpal Singh and his aide, Lovepreet Tufan Singh. Tanishq, what's happened there? Because Lovepreet has just come to the Golden Temple. Yes, Sonia, it was about an hour ago when Lovepreet Singh and Amritpal Singh arrived here at the Golden Temple. As you can see on this on the screen, the visuals of him arriving, there was heavy security deployment. There was massive crowd of his supporters. There was hardly any space for anybody to walk. And right now, he is inside the Golden Temple praying and praying along with Amritpal Singh. Now, what has happened in the past 2 days, yesterday and today? Yesterday, the whole police station being laid siege by Amritpal's supporter, and now today he being released. Let's have a look of all that happened in the past 2 days.
A major embarrassment for the Punjab police. Lovepreet Tufan, the aide of a radical Punjab-based preacher and Khalistan sympathizer Amritpal Singh, walked out of jail today. 24 hours after Singh's supporters, some of them brandishing swords and guns, broke through barricades and entered the police station complex where Lovepreet was being held in a kidnapping and assault case. In its release order, a local court noted that the Punjab police have said that Lovepreet has not been found guilty of any offence. We have acted with restraint on account of the presence of Shri Guru Granth Sahib Ji. Punjab police is committed to maintain peace and harmony in Punjab. Certain elements are trying to destabilize the peace in Punjab. The police also claimed today they did not intervene on Thursday during the violence because the attackers were carrying a Guru Granth Sahib, the holy book of the Sikhs. हमारी पुलिस ने इतना सत्कार किया गुरु साहब जी का, मुलाजमों ने, हमारे पास बहुत था, हमारे पास वाजरा गाड़ी थी, वाटर कैनन थी, और थे, लेकिन हमने कुछ भी ऐसा नहीं किया, गुरु साहब का सत्कार किया. Amritpal Singh is the head of Waris Punjab Day, a group founded by activist Deep Sidhu, who died in a road accident in February last year. He is accused of fanning pro-Khalistan separatist sentiments in his areas of influence near Amritsar. While this is not the first case of separatist uprising in the state of Punjab, there have been cases in the previous government as well, happening at the time when Punjab CM is inviting investors into the state. The situation right now is very tricky for the Punjab government. With Saurabh Shukla, Tanish Punjabi for NDTV. So, situation that's being closely tracked there. But meanwhile, of course, elections on Monday on two states in Nagaland and Meghalaya, and Prime Minister Modi in both states today making a strong pitch for votes in favour of the BJP. Now, of course, both these states are predominantly Christian dominated. So there's been a change also in the BJP's campaigning style here. बीजेपी, एनडीए, हमारी सरकार ने पूरे नॉर्थ ईस्ट के लिए दिल्ली की पॉलिटिकल सोच को ही बदल दिया है. Naga spear is in his hands. He is now a Naga warrior, ladies and gentlemen. Please give him a round of applause. A pitch for the Christian vote by Prime Minister Narendra Modi in Nagaland, a state with the 87.93% Christian population, the highest among the three northeastern states polling this month. We seek your guidance as we begin this program. Bless and guide all our national and state political leaders in the name of our Lord Savior Jesus Christ. Amen. While NDTV founder and four-time Chief Minister Neefu Rio is the face of the BJP-NDTV alliance, the BJP is trying to better its 2018 Nagaland result, where it won 12 of the 20 seats it contested, despite the opposition calling the BJP anti-Christian. The BJP Karyakartas are Christians. So we have our emotions to our faith. In other parts of the state, the BJP Karyakartas are majority Hindus and they have their emotions attached to it. We who are here in Nagaland respect them for who they are, and they who are there in the rest of the country respects us for who we are. And that is the diversity of having different faiths, yet being driven by nationalism, which Modi ji is doing, and where we the Nagas are also following that today. In Meghalaya, with a 75% Christian population, the BJP faces a tougher task. It won just 2 seats here in the 2018 election of the 47 it contested. Now the BJP is fighting all seats but battling an anti-Christian perception. So much so that its state chief had to speak about eating beef, a way of life in Meghalaya, multiple times. In our state, from long back, like in Arkhasi, Jaintia and Garo, we are having beef. So there is no restriction from the party that why you have beef, anything. There is no restriction in Meghalaya. Right. This is only the propaganda of some others party. With the BJP's Christian push in the northeastern states,
The big question is whether the BJP wants to be seen as a pan-Indian inclusive force in the run-up to 2024 or stick to its hardline Hindutva stance in Hindi heartland states. In Nagaland, with camera person Sanjay Chakravarti, Vedant for NDTV. In other news, markets have declined for the sixth straight session today. It's the worst week for the markets in over 6 months. The Sensex today ending the week falling by 141 points. The Nifty also continuing its losing streak, falling 45 points. Metal shares declined the most, the rupee closing flat today. Growth and rising interest rates concerns have hurt investor sentiment, especially foreign investor sentiment at the moment. Well, a defeat for India yesterday in the semi-finals of the Women's T20 was always heartbreaking, but especially for this young woman cricketer, the captain who actually came out of hospital to try and lead her team to success. And here she was being reminded by another fellow great cricketer that this happens in sports. What matters is that she did her best and gave her all. इंटेंशन तो यही था कि मैं अपने कप्तान को थोड़ा सा सहानुभूति दूं। इमोशनल मोमेंट था उसके लिए भी, मेरे लिए भी। हरमनप्रीत कौर एक कदम पीछे लेने वाले खिलाड़ियों में से नहीं है, एक कदम आगे लेने वाले खिलाड़ियों में से, और वही उसने किया। जो वो पूरा मैच था, मैं समझ पा रही हूँ कि हरमनप्रीत कौर के दिल और दिमाग पे समय क्या बीत रही होगी। और प्लेयर टू प्लेयर एक मोमेंट था सिर्फ कि एक अपने गम गलत थोड़े से कम कर लें और शेयर कर लें कि कैसे हल्के हो सकते हैं अपने गम। Player to player, a special moment, and for that young captain, they will go on to win another tournament very, very soon. That's it on the news, but coming up next, our special focus on the 1 year of the Ukraine war. Vishnu. Well, we've got a couple of special reports and also a conversation on India and our policy over the last 1 year, balancing our national interest with that equation with the Ukraine and Russia. All that and a lot more.